Do you feel less confident when seeing these kind of faux pas or amicus curiae, these kind of English foreign words, whenever it is used? Hello and welcome to EVPI. I am Shilpi and let's have a look of some foreign words that are used in English and they are derived from French or Latin language. And let's quickly have a look like faux pas हम यूज करते हैं द सिचुएशन वेयर जहाँ पे कोई मेजर एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है लाइक वेयरिंग नाइट ड्रेस इन वेडिंग्स आर मेजर फॉपा एमिकस क्यूरी इज जनरली यूज्ड बाय द कोर्ट जो कोर्ट के फ्रेंड होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं लाइक एनजीओ हेल्प वर्क एज एमिकस क्यूरी इन दिस केस प्राइमा फेशियल जो हमें पहली बार सिचुएशन देख के रखती है कि सामने से फर्स्ट ग्लांस में हमें लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा that is called prima facie. Prima facie, it looks like a suicide. Deja vu जब कोई कंडीशन हमें ऐसी लगती है कि कोई चीज हमें कोई देख के हमें पुरानी रिकॉल होती है, that is called deja vu. While seeing you, I feel deja vu. And status quo means to maintain the similar situation. What is going on? जो भी चल रहा है उसको चलते रहने देना. It is called status quo. Maintain the status quo. Cliche. Cliche is a word used. These are the जो बहुत ज्यादा overused phrases होते हैं. Like tit for tat. अगर हम कहीं use करते हैं तो these are for cliche. Boon voyage is called happy journey. जब आप किसी को शुभ यात्रा बोलते हैं, that is also called boon voyage. And this is very much used in English. Ad hoc means the person who is taken for a special purpose and to complete the task. Alma mater is a school or college from where you have studied. Like I am alma mater of Delhi University, etc. You all know कि similar situation में कोई चीजों का example दिया जा रहा होता है like animals, tiger, deer, elephant, etc. That's it for today. Thank you.